Everyone, good morning. I hope you all can hear me and see me. Please write yes in the chat if you can hear me and see me clearly. Good morning, good morning. Good morning, Arpit sir. Can you hear me? Yeah. Good morning, Anuj. Just setting up the frame. Sure, sure. You can take a minute or two to settle down and then we'll start the session. Sure. I can see queries are coming in. Good morning, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager here at Motilal Oswal. For the today morning session, we have Mr. Arpit Beriwal sir with us, who is a Bank Nifty expert and will be taking the morning session. And Happy New Year in advance is 31st. We hope we have a profitable day so that we have a blast start for the new year. The morning session focuses more around stocks and equity, so feel free to drop as many queries as possible. We'll be happy to cater them. And just don't write a stock name. It's a request. Please write more details. कि कितने price पे buy किया, for what duration, your the quantity, so we can give you more detailed answer. So we're all set, Arpit sir. Over to you. Yeah. Very good morning to all the viewers. Wishing you a very happy new year in advance, and hope how we have seen 2024 roller coaster ride, but the returns were good. And coming year, definitely we will see a better times, as overall India, the bigger trend is still intact. However, the short-term volatility will be there. That is part and parcel of the market, but the bigger trend is intact. So stay investing, keep it for the longer term view, and do happy trading. So welcome to Fin Nifty monthly expiry day. As we have seen, weekly contracts have been initially there were weekly contracts for Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, but now going forward it has been discontinued. So today we have Fin Nifty monthly expiry day. So the flow for the session would be starting with Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty. What is the view on the indices? Then the broader view, which sectors are looking good, कौन से सेक्टर्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कौन से स्टॉक्स वीक है, एंड उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टार्टिंग विद द हेडलाइन इंडेक्स, फर्स्ट इज निफ्टी. सो अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी का ये डेली चार्ट है. पिछले काफी दिनों से 7 से 8 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था निफ्टी. नीचे 23,550, 23,600 से लेके ऊपर 23,850, 23,900 की रेंज में. कल हमने थोड़ा सा पॉजिटिव देखा, बट सेकंड हाफ में वापस सेलिंग देखा, एंड आज वापस हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी है, मेनली ड्यू टू द ग्लोबल वीकनेस अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ आज सेटअप. ऑल्सो हम देखें तो ओवरऑल थोड़ा निफ्टी पेन में ही है. तो पहले एक जो 24,200 जो एक सपोर्ट हुआ करता था, अब इमीडिएट बेसिस पे 24,050 से लेके 24,101 हर्डल जोन हो गया है. नीचे में 23,500, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है, जो नवंबर सीरीज के लो थे, 23,333. 23,333 वो लो है, और इलेक्शन डे का 4 जून का हाई भी है. तो 23,333 एक मेजर सपोर्ट जोन है. अपसाइड में इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो 23,750 एक इंट्राडे मेजर हर्डल है. सो निफ्टी का ये व्यू हुआ, जब तक 23,750 के नीचे रहता है निफ्टी, हमारा बायस नेगेटिव ही रहेगा, सेल ऑन बाउंस की चांस रहेगी. नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक. निफ्टी बैंक अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक भी कल एक शार्प अपमूव के बाद फर्स्ट सेशन में हमने काफी सेलिंग प्रेशर देखा, ऊपर से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का करेक्शन देखा. 51,950 से हमने ऑलमोस्ट करेक्टिव मूव देखा 1000 पॉइंट्स का. 50 डेमा जो अगर आप देख रहे डेली चार्ट पे, वहां पे ही रेजिस्टेंस लिया, एंड वहां से हमने थोड़ा फ्री फ्लो देखा, मेनली बिकॉज ऑफ करेक्शन इन एचडीएफसी बैंक. आज हमने वापस गैप डाउन ओपनिंग देखी है, एंड उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हमने नीचे के लेवल से देखी है 50,600 के लेवल से. सो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो ब्रॉडर ट्रेंड, अगर मंथली और वीकली ट्रेंड देखें तो एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है. नीचे में 49,800 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 52,000 का हर्डल है. इमीडिएट बेसिस पे अगर हम चार्ट वाइज देखें, इमीडिएट बेसिस पे तो 50,500 का सपोर्ट है, और ऊपर में 51,250. इसमें भी हमारी सेल ऑन बाउंस की स्टैंस ही रहेगी जब तक बैंक निफ्टी 51,250 के नीचे ट्रेड करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में काफी हमने विपसॉस देखे हैं, काफी बड़े स्विंग्स भी देखे हैं, बट एक डायरेक्शन को पकड़ के उसको प्ले करना काफी इंपॉर्टेंट है. सो बैंक निफ्टी में भी जब तक 51,250 के नीचे रहता है, हमारी सेल ऑन बाउंस की स्टैंस ही रहेगा. बैंक निफ्टी में नीचे में सपोर्ट है 50,500. सो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में हम चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली रेंज में है, निफ्टी थोड़ा ज्यादा पेन में है. इसी के साथ टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडेक्स, दैट इज फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, जो आज मंथली एक्सपायरी है.
So let us talk about little bit of the setup also. Similar structure of Bank Nifty, पॉजिटिव कोरिलेशन है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का 95% ऑलमोस्ट. सो अगर हम डेली स्केल पे देखें तो इन्वर्टेड पोल फ्लैग का ब्रेकडाउन दिया है, बट गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है. सो लेट मी हैव अ लुक एट द इंट्राडे चार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी 23,400 के अराउंड, वहां से थोड़ा सा पुल बैक देखा है एंड नाउ एक साइडवेज है. तो फिन निफ्टी के भी अगर लेवल्स के बारे में हम बात करें, अभी 23,500 चल रहा है. इमीडिएट बेसिस पे एक मेजर जो हर्डल है 23,650, 23,700 एक सप्लाई जोन है फिन निफ्टी के लिए, जो पहले एक सपोर्ट जोन हुआ करता था. नीचे में सपोर्ट है 23,400 और फिर 23,300. सो ब्रॉडर रेंज ये है क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग सीरीज हुई है और वोलेटिलिटी भी हाई है, जिसके वजह से ब्रॉडर रेंज है. सो फिन निफ्टी में भी ओवरऑल सेटअप वाइज देखें, जब तक 23,650, 23,700 के नीचे है, सेल ऑन बाउंस की स्टैंड से रहेगा. ना अगर हम ओवरऑल मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करें, कल हमने लास्ट 45 मिनट्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखा मिड कैप स्टॉक्स में, मेनली ड्यू टू एमएससीआई रीबैलेंसिंग, बट पोस्ट दैट वापस हमने कूल ऑफ देख लिया. सो पूरे मार्केट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो वेरी सिलेक्टिव सेक्टर्स में ही आउट परफॉर्मेंस है. सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो हम काफी टाइम से बुलिश है, ऑलमोस्ट एक वीक से, दैट इज निफ्टी फार्मा. एंड अगर आप निफ्टी फार्मा का सेटअप देखें, सो इंस्पाइट ऑफ इतनी मार्केट में वोलेटिलिटी, चॉपीनेस, वीकनेस की वजह से भी इट इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है. मंथली और वीकली सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है. डेली स्केल पे भी रेंज ब्रेकआउट दिया था और हायर लोस का हायर लोस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. सो इसमें हमारे दो काउंटर पसंदीदा है जो एक पोजिशनली वाइज काफी अच्छे लग रहे हैं. एक है ऑरो फार्मा, जो एक बॉटम फिशिंग कैंडिडेट, रिवर्सल कैंडिडेट है. वीकली स्केल पे रेंज ब्रेकआउट दिया है और धीरे धीरे अपमूव स्टार्ट कर दिया है. सो स्लोली स्टडीली हमें लग रहा है 1400 तक का जा सकता है. और दूसरा हमारा ऑलरेडी था हमारा ल्यूपिन. सो ल्यूपिन हम काफी बुलिश थे और हमने एक वन वे रैली देखी है फ्रॉम 2100 टू 2300 लेवल्स. अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है मंथली और वीकली सेटअप है. सो कोई भी डिप अगर आता है ल्यूपिन में, सो हमारी वापस बाय करने की सलाह रहेगी. सो ल्यूपिन और ऑरो फार्मा द टॉप टू पिक्स फ्रॉम द फार्मा पैक इफ यू सी द सेक्टर वाइज. अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सेक्टर्स में वीकनेस है, चाहे वो निफ्टी मेटल हो, चाहे वो निफ्टी पीएसयू स्टॉक्स हो, चाहे वो निफ्टी मीडिया हो. सो ओवरऑल काफी हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में पेन है, पर उसी में सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है. सो हैविंग सेड दैट, व्हाट वी कैन डू, अनवर, we can take a couple of stock queries in between, and if we see any trading opportunities on any indices, we'll update on that. और stocks में भी जो intraday basis पे हमें अच्छे लग रहे हैं, उस पे भी हम अपडेट करें. Sir, your view on Lupin? Lupin, so as we have already said, one of the strongest counter within the pharma pack, very strong. Positionally, it can head towards 2500 plus levels. Immediate basis पे अगर किसी ने पहले पोजीशन ली हो, तो ये लेवल पे आपको ट्रेल एसएल करना चाहिए 20 to 90 का, और कब तक आप होल्ड करना चाहिए. सेटअप इज वेरी स्ट्रांग विद इन द एंटायर फार्मा पैक. 2250 का मेजर सपोर्ट है, इमीडिएट बेसिस पे 2290 का सपोर्ट है. Loris Lab. Loris Lab, similar from the pharma pack itself. So Loris pack का भी हम स्ट्रक्चर वाइज देखिए तो आफ्टर ए गुड अप मूव पिछले 7 से 8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, वापस ने रेंज ब्रेकआउट दिया है, वापस अपने मल्टी वीकली हाइस के वहीं ट्रेड कर रहा है. सो सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है. बेस अभी इमीडिएटली सपोर्ट इसका हो गया 570 का. 570 मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 600 और फिर 620 625 के लिए मूव धीरे धीरे. लॉरेस लैब सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है. And as we are discussing also, we have seen some recovery in Nifty and Bank Nifty. And if we see, this has been the structure of the market. काफी volatility हमने देखी है. And अगर आप देखें, ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, नीचे की तरफ थोड़ा सा बाइंग इंड्यूस हो रहा है, बट स्टिल अगर आप बिगर ट्रेंड अभी भी देखें तो थोड़ा सा पेन में है. सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बढ़िया है, बट इंडाइसेस में ओवरऑल निफ्टी में कंपेरेटिवली देखो तो ज्यादा पेन है. बैंक निफ्टी एक रिलेटिवली रेंज में है. सो ये रेंज समझ के हमें प्ले आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ हम देखें तो स्टॉक्स वाइज में एक तो ऑरो फार्मा एंड ल्यूपिन हमने ऑलरेडी सजेस्ट किया है फार्मा स्पेस में, जो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं. और इसके साथ एक और जो हमारा फार्मा पैक में से है, दैट इज पीपल फार्मा. सो एज वी सी कि पीपल फार्मा में भी पिछले काफी दिनों से 50 डेमा पे सपोर्ट ले रहा था. कल एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, आज कंसोलिडेट कर रहा है. बट पिरावल फार्मा हमें लग रहा है कि जैसे सेक्टर फ्लेवर में है, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर दिस ऑन इंट्राडे बेसिस आल्सो. सो अभी 263 264 चल रहा है. आप 259 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं 270 272 के टारगेट के लिए.
Sir, HDFC Bank bought 200 shares at 1800. 1800 1800 ओके 1800 1800। अगर आप एचडीएफसी बैंक का हम चार्ट देखें तो मंथली स्केल पे इसने रेंज ब्रेकआउट दिया था 1750 के ऊपर, अच्छी रैली हमने देखी टुवर्ड्स 1900 एंड मार्च थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखा है। सो सेटअप वाइज जैसे बैंक निफ्टी है पिछले 6 महीनों से एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक आई थिंक ओवरऑल सेटअप वाइज अभी भी स्ट्रांग ही है। नीचे में सपोर्ट है 1750 1740 का, ऊपर में 1850 1880। बट हमें ध्यान रखना है ये स्लो एंड स्टडी काउंटर है जिसमें मेजर मूवमेंट नहीं होता है बट स्लोली स्टडीली चलता है। तो जब तक 1740 के ऊपर है अगर ट्रेडिंग बेटर तो कंटिन्यू टू होल्ड दैट। इन्वेस्टमेंट वाइज अभी भी काफी स्ट्रांग है, 3 साल से कंसोलिडेट कर रहा था और उसने फाइनली रेंज ब्रेकआउट दिया 1700 के ऊपर। तो धीरे धीरे हमें ये 1850 1900 और 2000 तक का भी मूव देख सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीनों। One more thing I would like to add within this, guys, when we have seen there's so much volatility and choppiness across the market, it's very important कि हम अपना जो माइंड है उसको कंट्रोल रखिए, जो सेक्टर्स फ्लेवर में है उसको प्ले करें जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी हायर है। तो अगर आप देखो कि भी ओवरऑल लास्ट 5 से 6 दिनों में काफी उठक पटक रही काफी सेक्टर्स में, बट एक जो सेक्टर स्टैंड आउट किया वो फार्मा, एंड उसमें काफी अच्छे मोमेंटम भी प्ले आउट हुए हैं। सो व्हेन वी सी कि कभी-कभार इंडाइसेस में मेजर मूवमेंट नहीं आ रहा है या काफी वोलेटिलिटी हो रहा है, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, सो आप सेक्टर स्पेसिफिक प्ले कर सकते हैं एंड उसमें आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा मूवमेंट रहता है। तो ध्यान रखिए कि उसको प्ले करें बिकॉज मार्केट में इफ यू सी अपॉर्चुनिटीज काफी है बट करंट मार्केट में वोलेटिलिटी भी काफी है जिसके वजह से काफी बार मूव्स काफी बड़े प्ले आउट हो रहे हैं और एट द सेम टाइम हिट करके वापस स्टॉक या इंडाइसेस वहीं आ रहे हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है करंट मार्केट में जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्रूशियली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ इफ आई अगेन सी द मार्केट ब्रेथ आफ्टर अ शार्प रिकवरी, अगेन वी हैव सीन अ शार्प फॉल इन निफ्टी स्पेशली। सो दिस हैज बीन द नेचर ऑफ द मार्केट। जैसे हम बोल रहे हैं कि बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है, सो गाइस बेटर टू प्ले विद दैट ट्रेंड इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। आज फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है एंड अभी अगर हम लुक एट द सेटअप वाइज, लेट मी लुक एट द फिन निफ्टी setup. And if I see if I can get any we get any opportunity for the option buying or we can go with any some spreads. Let us have a look at the chart. So 23,500 भी चल रहा है। let me check at the premium. So 23,500 भी फिन निफ्टी चल रहा है। ओवरऑल बाइस हमारा नेगेटिव है। 23,650 700 के नीचे जब तक रहेगा तब तक हमारा बाइस नेगेटिव रहेगा। सो वील सी अगर कोई मोमेंटम प्ले आउट होता है या कोई स्ट्रेटेजी के थ्रू हम स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फिन निफ्टी में, विल अपडेट ऑन इट। एज ऑफ नाउ फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ऑल थ्री इंडाइसेस द व्यू इज नेगेटिव। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मूवमेंट इज देयर, सो वी हैव टू प्ले इट अकॉर्डिंगली। Sir, Ipka Lab new entry. Yeah, so another pack from pharma. I think our viewers also become quite risk covers and smartly playing out the market momentum. So if we see the setup wise from the pharma pack itself, weekly setup is very strong. Range breakout above 1620 levels. Daily scale पे higher highs का structure intact है. Near life high territory. So I think positionally, as sector is in flavor, we can see a good up move of 5 to 7% towards 1700, 1750 levels. So continue to hold. अगर fresh position add करनी है तो आप add कर सकते हैं 1600 के 20 के stop loss से ऊपर 1700, 1750 के टारगेट के। Sir, you on Paytm? Paytm, another stock from the new age company if we see, and new age stocks and digital stocks have been quite the flavor theme in last couple of months. अब चार्ट ही अगर देखें, so it's a clean uptrend, continuously holding about 50 DEMA, and slowly steadily we have seen a good move from 500 to almost 1000 levels. अगर हम पोजिशनल के बारे में बात करें, सो वीकली स्केल पे एक रेंज ब्रेकआउट दिया है 950,000 के ऊपर, एंड आई थिंक गुड वी कैन सी 15 to 20% मूव इन कमिंग 2 to 3 months व्यू। 1200 तक हमें मूव दिख सकता है इमीडिएट बेसिस पे। जब तक 970 के ऊपर है हमें 1100 का मूव दिख सकता है। कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक। Sir, view on Star Health? Star Health. Let me have a look at the chart. Star Health. If I see the setup wise, from last couple of weeks, it is consolidating between 450 to 510. However, downtrend में है, कोई भी मेजर सप्लाईज उनको सरपास नहीं कर पाया। जब तक ये 500 के नीचे है, तब तक बाइज would be negative.
So our advice would be exit on bounce near 500 levels and better to exit and move to some better counters. क्योंकि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है वो हमने देखा है काफी टाइम तक वो डाउन ट्रेंड में रह सकता है. सो बेटर टू एग्जिट द वीकनेस एंड बेटर टू ऐड पोजीशन इन द स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग काउंटर्स. Sir, trend 7100 put at 185. Trend? Yes, sir. Trend 7100 put. Okay. So if we have already bought 7100 put, setup wise, if I see on the upper band 7100 ही एक major hurdle है and नीचे में 6800. So I think 6800 अगर drift होता है तो better to book your positions in profit because 6801 है major support है, उसके नीचे ही fresh weakness है. So आपकी जो positions आप hold करके रखें, नीचे में 6800 850 के वहाँ पे आप book कर सकते हैं. और स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा जो आपका बाइंग प्राइस जो है 7100 जो है पुट के लिए, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम के हिसाब से. Sir, Oro Pharma. Another fact from the pharma, and I think we start our session with this counter itself. And if we see the setup wise also, it's very strong. Weekly setup एक range breakout दिया है 1280 1300 के ऊपर. And as pharma is in uptrend, however, this stock was in downtrend, but because of the sector flavorness, it has again regained its momentum. 50 demo को surpass किया है, and I think slowly steadily it can head towards 1350, 1360 level. So continue to hold the stock. अगर किसी को add करना है तो आप add कर सकते हैं 1200 के 90 के stop loss से, and for our upside move towards 1360 levels. So GICRE. Yeah, just a minute. Before that, I'll just try to look at the Nifty chart setup if we get any trading bets. So Nifty is trading around 23,500. Let me check the spread of 23,500 and 23,400 put bear put spread. Let me have a look at the spread की क्या premium चल रहा है. Just give me a minute. I'm looking at the premium. So 23,500 and 23,400. The net spread is around. It's around the costing is around 30 to 35 points. So I think जैसा भी मार्केट का स्ट्रक्चर है जो क्लियर डाउन ट्रेंड में नहीं है, थोड़ा सा बाउंस बैक आता है फिर मारता है, थोड़ा सा बाउंस बैक आता है, then we see some corrective move. So fin nifty bear put strategy we can initiate for today's expiry, that is monthly. आप 23,500 का पुट बाय कर सकते हैं and then 23,400 का पुट सेल कर सकते हैं at net cost of around 35 points. आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड रहेगा 65 पॉइंट्स का to play the downside move with a slow and steadily downside tick. So I'll repeat, to play the downside tick in Fin Nifty, we can go with buying bear put spread. 23,500 का पुट बाय करके आप 23,400 का पुट सेल कर सकते हैं, नेट कॉस्टिंग अराउंड 35 points. Coming back to the stock with GICRE, right Anuj? Yes sir. Yeah. After, if we see the structure, we have seen massive movement in last couple of days, rally from 400 to 520 and then again a corrective move almost 20%. So I think setup wise जहाँ से rally शुरू हुई थी वापस वो वहीं आया है. So I think 420 425 major support zone है, but I think better to wait for any reversal कि क्या इसमें ये level पे play out होता है, because guys it's important to understand broader market का trend pain में है, जिसकी वजह से मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी थोड़े पेन में है. सो क्या हो रहा है, 100 काउंटर में 90 काउंटर अभी भी डाउन ट्रेंड में है, 8 से 10 काउंटर ही पॉजिटिव है. सो लेवल वाइज 420 का एक मेजर सपोर्ट है. एज ऑफ नाउ बाय की हमारी सलाह नहीं रहेगी, वी विल वेट फॉर एनी मेजर रिवर्सल. अगर रिवर्सल आता है 440 450 के ऊपर, तभी हमारी फ्रेश एंट्री करने की सलाह रहेगी. Sir, I'm just repeating. Bear put spread, Fin Nifty buy 23,500 put, Fin Nifty sell 23,400 put, combined premium 35. Perfect. Yes. Sir, I have Cummins India put strike 3,200 at 85 rupees. Please suggest for intraday. Cummins India, what is the strike price? 3,200 put. 3,200 put. Okay. So if I see capital stocks has been in pain and we have seen clearly underperform in the capital space, whether it's Cummins, whether it's L&T, Siemens, ABB. So I think Cummins wise, setup wise देखिए तो 3,200 का put आपने buy किया है. So downtrend में ही है जब तक 30. I'll just take the high for the stock 280. So 3,300 के जब तक नीचे है Cummins, continue to hold that put.
3300 आप स्पॉट लेवल्स में ध्यान रखिए, क्योंकि अभी सीरीज की जस्ट स्टार्टिंग हुई है, पूरा जनवरी से जब जस्ट स्टार्ट हुआ है. सो आई थिंक स्पॉट लेवल्स में जब तक क्यूमिस इंडिया 3300 के नीचे क्लोज होता है तब तक बायस नेगेटिव ही है. नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है अराउंड 3100 तक का, वहां पे आपको पोजीशंस बुक करने की सलाह रहेगी. Sir, Zomato. Zomato, another favorite counter from the new age and digital space playing out. We see setup wise एक पिछले काफी हफ्तों से एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है. अच्छी बात अगर देखें तो जैसे भी इसमें करेक्टिव मूव आता है वहां से वापस अप स्टार्ट हो जाता है. तो बार बार 50 डेमा के वहां पे थोड़ा सा हमने रिवर्सल देखा है. कल एक बड़े अपटिक के बाद वापस हमने थोड़ा कूल ऑफ देखा, बट सेटअप वाइज एक ब्रॉडर रेंज में जोमेटो इमीडिएट बेसिस पे 265 से लेके 285 की ब्रॉडर रेंज है. बड़ा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है. सो इमीडिएट बेसिस पे 265 का मेजर स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाय कर सकते हैं. ऊपर में 280, 290 और 295 के टारगेट है पोजिशनली. इमीडिएट बेसिस पे 268, 269 का सपोर्ट है. अपर बाउंड में 285 का हर्डल. Suzlon. Suzlon, as we see, broader market is a little bit in pain, mid cap, small cap. So एक हमने अच्छी pull back rally देखी थी from 52 levels towards 70 levels. However, वो rally थोड़ी fizzle out हो गई because from last couple of days Nifty has been in pain, broader market has been in pain, because of which majority stocks are in pain. So immediate basis पे I think 55 एक major support है. ऊपर में 65, 70 का hurdle है. So 55 major support है ना, ऊपर में 65 एक hurdle zone है. For any change in the setup, 65 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है. जब तक 65 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक एक रेंज बाउंड काउंटर रहेगा. नीचे भी सपोर्ट है, ऊपर भी हर्डल है. Sir, New Year is starting from tomorrow. मतलब आपने एक overview starting में दे दिया, but from a long term point of view, what sector should we focus, and even the budget is coming. Definitely. So what's your overall view? Yeah, rightly picked by Anuj. As we are heading to a newer perspective, so what is important is from last 9 years we have seen positive closing in Nifty, and this year also Nifty has been on year-to-year basis so far is 8% up. So we have seen a very good run in last 8 to 9 years. However, as new year, so we have new hopes, new aspirations. So I'll talk from the sector market outlook wise. As you've seen, very good rally from in Nifty in last 1 year itself, from 20,000 to 26,000. So a newer outlook is that नीचे जनवरी सीरीज टू फेब सीरीज थोड़ा सा हमें पेन दिख सकता है, बट एक इंडेक्स एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करेगा. 23,000 से लेके ऊपर ब्रॉडर रेंज में 26,000 तक की एक ब्रॉडर रेंज रहेगी. उसी में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सो आई थिंक 2025 would not be an index specific, but it would be sector specific. So the sectors that we are going to go about is first and foremost is the pharma. फार्मा में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो फार्मा सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है. उसी के साथ हम बोले तो अगर कैपिटल स्टॉक्स एंड इंटरमीडिएट्स, सो ऑल द कैपिटल मार्केट थीम्स, सीडीएसएल, के फिनटेक, exchanges stocks, they have been the broader market outperformance, and जैसे मार्केट वापस स्टेबल होगा they will start continue to outshine. Third would be the IT pack, mid cap IT stocks. So हमारे तीन ये मेजर बेट रहेंगे, और उसके साथ फोर्थ रहेगा न्यू एज कंपनी, दैट इज जोमेटो, पेटीएम एंड पॉलिसी बाजार. So it will be a blend of sector specific action for the coming year outlook, and within that if we see selective heavyweights जो है वो अच्छे है ही, but हमारी primary would be first would be pharma, the second would be the exchanges stocks, the capital market, third would be the new age companies, and the fourth would be the mid cap ITs. So this 3 to 4 sectors we are betting on for the coming 2025 outlook. Sector specific में, index specific में, I looking at the chart setup wise, we are going to like in a consolidation phase in a broader range, and that will be the thing. Along with that, as we are heading to near to budget, so the budget के पहले definitely हमें momentum दिखता है defense and railway stocks में. As of now, chart wise में कोई major हमने reversal नहीं देखा है, but I think the budget specific theme that will as of now it hasn't played out yet. But still, from the sector specific, we have already discussed. So 2025, we all hope that at the end of the year of next year, we see new highs. But so far, the first half of the 2025, we are expecting a range-bound move in indices, and stock-specific action is likely to continue. It's very important, guys. Last 6 months, अगर हम देखें तो Nifty was at 23,500. Now again, it's at 23,500 near elections high. But a lot of sectors have changed. A lot of dynamics has changed. So we have to understand we play out with the right sectors, right stocks, and right uptrending counters. Avoid bottom fishing counters, because जो एक bottom fishing करते हैं, जो डाउन ट्रेंड में है, वो वीकनेस में ही रहते हैं. एग्जांपल्स लाइक आइडियाज, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, ये टोटली डाउन ट्रेंड में है. सो बेटर टू अवॉइड.
So sectors we have discussed, Anuj, ideas we have discussed, conviction delivery idea also we have discussed about Oro Pharma, Lupin, PPL Pharma also we have discussed the pharma package looking good. One strategy we've initiated for Fin Nifty to play the downside swing at net cost of 35 points. We have already shared and Anuj has already mentioned in the box also. Having said that, Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty, our outlook is negative for intraday basis also. Today being Fin Nifty expiry, we'll have Nikunj in the second half for the Fin Nifty trade setup. So I think overall, concluding with all the parameters in mind, guys, little bit choppiness is there, volatility is there. So stay, be patient. Don't try to jump onto the stock just by looking at the stock गिर रहा है तो आप add कर सकते हैं. Look at the technicals also, the price actions also, and the market sentiment. Slowly, steadily, things will improve and definitely we'll see momentum. But in the meantime, keep enjoying our stock specific ideas and try to manage your position on the intraday basis rather than on the overnight basis, because overnight basis में काफी बार हम gap down और gap up opening देखते हैं जिसकी वजह से आपकी position sizing change हो जाती है. So I think Anuj, we can take if you have any couple of more queries, and then accordingly we can close it out going forward. I guess so we can end the session. We don't have any queries as of now, but great things said by you, sir. मतलब generally from a user perspective, if I say कि अगर stock गिर रहा है तो मेरा second thought यही होता है कि add कर लेते हैं, क्या पता ऊपर चला जाएगा, right? But I guess that is something which we should not do. So I guess the gyan of the last year's end is this कि don't trade on like very promptly. You need to think, analyze, and then take a call. बाकी we have our research experts, guys. You can ask here anything. अगर हम यहाँ पे आपके queries को ना ले पाए तो you can ask on Stockholm and we'll be happy to answer. Thank you everyone for joining in. Do join in at 2:30 p.m. for the Fin Nifty expiry. One thing I just like to add, Anuj, one thing before Yes, sir. So as we are heading to the new year, so one mantra, as we already mentioned, follow the trend till it bends, and that, guys, we have experienced over the years. It would be really helpful for long-term investing also, for trading also, and likewise for all and all. So thank you guys from our side. See you all for the afternoon session.